Good morning, students. Today, the topic for discussion is mechanics of respiration. So, mechanics of respiration includes all those processes which helps in the movement of air in and out of the lungs. So, mechanics of breathing is the study of the physical properties of lungs, airways, and chest walls involved in the physiology of respiration. So, one basic law which we need to understand for this chapter is that pressure is inversely proportional to the volume. So, whenever the volume is increased, the pressure goes down, and the volume is decreased, the pressure goes up. Now, in this slide, you can see that we are comparing the chest wall to a box, a closed box. So, if we increase the volume of this box, closed box, the pressure decreases, and you know that the air flows from higher pressure to the lower pressure. And if the volume of this box decreases, the pressure increases, and the air from this box will flow out. So, this is actually happening in the lung. You can see that the lungs are, attached to the external atmosphere with the help of the trachea. So, the pressure changes are actually reflected this way. You can see this again, you can see this diagram. यहाँ पे जो ये नीचे वाला पार्ट है रेड कलर का, ये आपको डायफ्राम का फंक्शन दिखा रहा है कि जब भी हमने इसको फ्लोर को नीचे खींचा, वॉल्यूम बढ़ा, तो ये बैलून इन्फ्लेट हुआ क्योंकि एयर इनफ्लो हुई, है ना। और जब हमने इसको छोड़ा डायफ्राम को, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और बैलून डिफ्लेट हो गया एंड द एयर फ्लोड आउट। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द लंग्स वर्क। अब अगर हमें लंग्स जिस थोरैसिक कैविटी में है उसको अगर हमें उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो उसकी 3 डायमीटर्स हमें चेंज करनी होगी। यू ऑल नो दैट द thoracic cavity has 3 diameters: the vertical diameter, the transverse diameter and the AP diameter. तो जो वर्टिकल डायमीटर है इसका जो फ्लोर है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डायफ्राम। तो अगर डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करेगी तो वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाएगी। ट्रांसवर्स डायमीटर और एपी डायमीटर, आई विल शो यू अ पिक्चर। हाँ, वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि आगे के स्टर्नम है, रिब्स अटैच्ड हैं और रिब्स पीछे जाके वर्टिबल कॉलम से अटैच्ड हैं। दे फॉर्म अ पाइवट जॉइंट विद अ वर्टिबल कॉलम। तो अगर हम AP डायमीटर हुआ फ्रॉम स्टर्नम टू द वर्टिबल कॉलम और ट्रांसवर्स डायमीटर यू नो। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में जब भी हमें चेंज कराना होगा तो ये रिब्स मूव करेंगी, रिब्स थोड़ा सा अपना मूवमेंट चेंज करेंगी ऑल्दो दे आर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। तो विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स these ribs will move up और down, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ट्रांसवर्स डायमीटर चेंज होगा। वर्टिबल कॉलम फिक्स्ड है, अगर स्टर्नम आगे की तरफ मूव करेगी तो दिस विल इंक्रीज द AP diameter. Again this will be accomplished with the help of the external intercostal muscles. When they will contract, they will move the sternum forward. इन्हीं दो तरीके के मूवमेंट को हम बकेट हैंडल या पंप हैंडल मूवमेंट्स बोलते हैं। So if we want to increase the vertical diameter, I'll show you another diagram. So you can see the red colored diaphragm. If diaphragm contracts, it becomes straight and the vertical diameter increases.
You can see in this diagram, whenever the person inhales, what happens, this diaphragm contracts and becomes straight. The vertical diameter increases, thereby increasing the thoracic cavity. दूसरा क्या है, let's study diaphragm first. Diaphragm is dome-shaped muscle which separates thoracic cavity and abdominal cavity. It is a skeletal muscle. When it contracts, the dome is flattened and it comes or descend down, thus increasing the vertical diameter. During quiet breathing, the descent is 1.5 centimeter, while in forced breathing, the descent is 7 centimeter. The descent of diaphragm increases abdominal pressure, and this is accommodated by relaxation of abdominal musculature. This increases vertical diameter. 70% expansion of thoracic cavity occurs. Now, how the AP and the transverse diameter are increased. There are two important movements, the bucket handle and the pump handle movement. So these increases the AP and the transverse diameter of the thoracic cavity. How? Let's see. The external intercostal muscle fibers, they slope forward and downward. The fibers extend from the inferior border of the upper rib to the superior border of the lower rib. When they contract, they lift the ribs towards the first rib. And you know the ribs fix themselves to the vertebral end, making a pivot joint. So second to the tenth ribs, they rotate upward and outward due to the contraction of the external intercostal muscles, and this is similar to the bucket handle movement, thus increasing the transverse movement. You can see a bucket is here. अगर आप बकेट का हैंडल उठाएं तो आप देखेंगे कि जो डायमीटर स्पेसिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. सिमिलरली जब ये रिब्स जो हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इन्हें मूव कराती हैं, लिफ्ट कराती हैं, तो दे एग्जिबिट a movement similar to the bucket handle movement. तो वर्टिकल डायमीटर हमारी thoracic कैविटी की बढ़ी थी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है इट इज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द bucket handle movement. Now we are coming to the pump handle movement. Now you know that ribs are attached to the sternum and the vertebral column at the back. Upper four ribs rotate sternum upward and outward by the contraction of the external intercostal muscles, and the sternum moves forward and backward. Whenever the external intercostal muscles will contract, it will go forward, then it will come back on their relaxation. So this is a movement similar to what you call pump handle movement. So if downward sloping ribs are raised at their sternal ends, making rib joint and vertebral joint as pivot joint, the lower end of sternum would thrust forward, and this is what you call the pump handle movement. तो आपने देखा कि हमने जो थोरैसिक कैविटी थी उसमें हमने वॉल्यूम चेंज करना था, क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तभी प्रेशर डिक्रीज़ होगा एंड द एयर विल फ्लो इनटू द लंग्स. वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के 3 तरीके थे. वर्टिकल डायमीटर बढ़ा दो, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा दो और ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ा दो. तो वर्टिकल डायमीटर हमारी बढ़ी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम. हमारी ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द पम्प हैंडल मूवमेंट, बकेट हैंडल मूवमेंट, सॉरी नॉट पम्प हैंडल मूवमेंट, बकेट हैंडल मूवमेंट. और हमारी
AP diameter increase हुई because of the pump handle movement. अब ये तीनों जो movements थे, इन्होंने क्या करा कि they increased the volume of the thoracic cavity. Now because the volume has increased, so the pressure inside the lungs, which is the intra-alveolar pressure, it has gone down. Now the lungs are connected to the outer atmospheric pressure with the help of the trachea. तो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर ज़्यादा हो गया और लंग्स में कम हो गया, तो एयर विल फ्लो इन टू द लंग्स एंड दिस इज़ हाउ द इंस्पिरेशन विल अकर. जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगी, द मसल्स विल रिकॉइल टू देयर पोजीशंस, the ribs will come back to their position, the volume will decrease, the pressure will increase, and the air from lungs will move into the atmosphere, thus leading to the expiration. So this is how the inspiration and expiration occurs. I am again repeating that lung or thoracic cavity, it behaves as a closed chamber which has only one entrance and exit, that is through the trachea. Now whenever you know the Boyle's law, that at fixed temperature, whenever you increase the volume, the pressure goes down, and whenever you increase the then vice versa happens. So if we increase the volume of the lung, the pressure will go down and the air from the outer atmospheric pressure through the trachea will flow into the lungs. और वॉल्यूम बढ़ाने के क्या तरीके हैं कि हम थोरेसिक कैविटी की तीनों डायमीटर्स बढ़ा दें, वर्टिकल डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और एपी डायमीटर. वर्टिकल डायमीटर जब डायफ्राम स्ट्रेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाएगी, जो 70% रिस्पॉन्सिबल होगी थोरेसिक कैविटी को बढ़ाने के लिए. ट्रांसवर्स डायमीटर will increase due to the bucket handle movement and AP diameter will increase due to the pump handle movement of the sternum. तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुआ और एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द ट्रैकिया flows into the lung because the intra-alveolar pressure or the intrapulmonary pressure has gone down. एंड इस प्रेशर के डिक्रीज होते ही एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ आती है एंड द इंस्पिरेशन अकर्स. नाउ लेट्स स्टडी सर्टेन प्रेशर्स. The pressure inside the alveoli is known as the intra-alveolar pressure or the intrapulmonary pressure. दूसरा प्रेशर हुआ इंट्राप्लूरल प्रेशर. इंट्राप्लूरल प्रेशर इज the pressure inside the pleural cavity. So this is known as the intrapleural pressure. Now what is the significance of these pressures? You all know that intrapleural space is the space between the visceral and the parietal pleura, and you also know as that the lung has a tendency to collapse and the chest wall has a tendency to move out. तो लंग्स जो है वो सर्फेक्टेंट और इलास्टिक फ्लूइड्स की वजह से हमेशा लंग जो है हमेशा कोलैप्स होना चाहता है बिकॉज ऑफ द इलास्टिन फाइबर्स एंड द फ्लूइड विच लाइन्स द एल्वोलाई. जो चेस्ट वॉल है इट ऑलवेज वांट टू मूव आउट बिकॉज ऑफ द ribs and the elastic structures which it contains. So now what happens, the lungs want to collapse and the chest wall wants to move out.
The visceral pleura is attached to the lungs and the parietal pleura is attached to the chest wall. तो जब ये दोनों अपनी अपनी तरफ खिंचती हैं तो what happens, the intrapleural space, the volume increases and the pressure goes down in the intrapleural space. So what happens, the intrapleural pressure is, that's why, negative always. So during quiet breathing, it is minus 6 millimeter of mercury or minus 8 centimeter of water, while in expiration it is minus 2.52, minus 4 millimeter mercury or minus 5 centimeter of water. Now, whenever the intrapleural pressure increases, it gives way to the lungs to expand, and when the lungs expand, the intrapleural pressure, the intraalveolar pressure falls down, or the intrapulmonary pressure falls down, and the air from outside flows into the lung. This is how the intrapleural pressure and the intrapulmonary pressure, they are attached to each other. कि जब जब इंट्राप्लूरल प्रेशर में जितना फॉल होगा चेस्ट लंग के एक्सपेंशन से और लंग और थोरेसिक कैविटी के इंटरैक्शन से, अपोजिट मूवमेंट से, जितना ये इंट्राप्लूरल प्रेशर फॉल होगा उतना ही लंग्स को चांस मिलेगा एक्सपेंड होने का जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. देन देर इज़ अनदर काइंड ऑफ प्रेशर which is known as the transpulmonary pressure. This is the pressure difference across the lung wall. So alveolar pressure minus intrapleural pressure is known as the transpulmonary pressure. Its significance is it keeps the lung inflated and prevents the lung from collapsing. So pulmonary ventilation is accomplished by two processes: inspiration, inflow of air into the lungs, which occurs when intrapulmonary or intraalveolar pressure falls below the atmospheric pressure. Expiration, outflow of air into the lungs, occurs when intrapulmonary pressure rises above atmospheric pressure. Now let's see the muscles of normal tidal inspiration. The muscles of normal tidal inspiration are diaphragm and external intercostal muscles, while the accessory muscles are scalene, sternocleidomastoid, serratus anterior and Ellenici. The muscles of expiration are internal intercostal muscles, abdominorecti muscles, transverse abdominis muscles and internal oblique muscle. So inspiration is an active process which is produced due to the contraction of diaphragm and external intercostal muscles. And because of the contraction of the diaphragm and external intercostal muscles, all the three diameters, that is the vertical, the AP and the transverse, they all increase, and thus leading to the increase in volume and the decrease of the इंट्रापल्मोनरी और इंट्राएल्वेओलर प्रेशर. और जैसे ही इंट्रापल्मोनरी और इंट्राएल्वेओलर प्रेशर डिक्रीज होता है वैसे ही एयर फ्रॉम आउटसाइड फ्लोज इनसाइड द लंग एंड द इंस्पिरेशन अकर्स. So this is what all about the mechanics of respiration. Sometimes you get a short note on mechanics of respiration. Thank you.